Hello everyone, very good morning. Welcome back to our editorial drill. I hope everyone is doing very good today. I hope you can hear and see me clearly as well. एक बार जल्दी से टेक चेक कर लेते हैं. बता दो मुझे मेरी आवाज आ रही है ना सबको अच्छे से. Everything is clearly audible and visible. So that we commence with our article for today. That's going to be a very interesting one. A very interesting take on our health. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. How is everyone today? Saturday, first thing in the morning. If you are watching me live, congratulations. You are one step closer to achieving your dream. I'll tell you why. Because it's very difficult for people to get up on a Saturday early in the morning for studying hard. तो अगर आप कर रहे हैं ऐसा, congratulations. You're working hard, you're pushing yourself, है ना? मैं भी सोच सकती थी, आप भी सोच सकते थे, but we've decided not to do that. We've decided together to make it through, read articles, understand the nuanced meaning of each sentence, infer a lot of things, simultaneously learn vocabulary, and answer many questions that follow from the passage. Good morning, everybody. Good morning. So, I think tech check is good. I think everyone can hear and see me clearly. Start करते हैं आज के आर्टिकल के साथ. क्या करने वाले हैं हम आज के एजेंडा में? 1 second. Let me get hold of my pen tab. ठीक है, आपको पता है pen tab क्या होता है? Let me show you pen tab क्या होता है. Pen tab is a device like this जो मैं यूज करती हूँ for writing. जो मैं यहाँ लिखूंगी ना, it will be visible to you on the screen. So this is what we use. Getting back to क्या करने वाले हैं आज. So जो भी मैं editorial analysis, editorial drill आपके लिए लेके आती हूँ, उसमें हम क्या करते हैं? We take up articles from various genres, different genres, जिससे CAT हमको बहुत fondly articles देता है उन genres में से. ठीक है, एक मिनट. तो उन genres से articles लेते हैं, उन्हीं sources से लेते हैं जहां से बहुत frequently passages आते रहे हैं CAT में. ओके, तो आज का हमारा जॉनरे है साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी बोथ कंबाइंड. आपका फिजिक और आपका माइंड कैसे साथ में वर्क करता है, उस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टेक है, आर्टिकल है. हम उसको पढ़ेंगे, साथ में हम रीडिंग टेक्निक सीखेंगे कि कैसे हमें हर पैराग्राफ के बाद पॉज करके हम पैराग्राफ को समझ सकते हैं, एक माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं. माइंड मैप. और जब हम पूरा पैसेज पढ़ लेंगे उसके एंड में मैं आपको उसका माइंड मैप बना के भी बताऊंगी. ठीक है, ये माइंड मैपिंग वाली जो टेक्निक होती है ये रिटेंशन में आपको बहुत हेल्प करती है. जब आप क्वेश्चंस आंसर करेंगे एक्चुअल एग्जामिनेशन में आफ्टर रीडिंग अ पैसेज, तो अगर आपने एक माइंड मैप क्रिएट किया था व्हाइल यू वर रीडिंग अ पैसेज, आप सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रहेगी, सारा डेटा आपको याद रहेगा, एंड व्हाइल फाइंडिंग एन आंसर टू अ क्वेश्चन आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, बार बार पैसेज में जाने का मन नहीं करेगा, बिकॉज एवरीथिंग विल बी देयर इन योर हेड. इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव टेक्निक टू सॉल्व पैसेजेस. ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा बोलता था या आपने कभी सुना होगा किसी से कि देखो पैसेज पढ़ने की कोई टेक्निक नहीं होती है, पैसेज बस पढ़ दो और आंसर कर दो, ये सबसे गलती, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है. तो अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है वो बहुत गलत है. बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम पैसेजेस इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं. ये टेक्निक जो है माइंड मैपिंग, शायद आप में से बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इस टेक्निक को माइंड मैप बोलते हैं. तो माइंड मैप में क्या होता है, हम हर पैराग्राफ के बाद पॉज करके अपने माइंड में सोचते हैं कि ये पैराग्राफ किस चीज की बात कर रहा है, और फिर हम क्या करते हैं, उन सारे पैराग्राफ्स को कोरिलेट करके एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं अपने हेड में बाय द एंड ऑफ द पैसेज बिफोर लुकिंग एट द क्वेश्चंस, कि अच्छा ये मेरा पैसेज है, ये मेरा पैसेज इस फ्लो में इस तरीके से बात कर रहा है. पहला पैराग्राफ ये बोल रहा है, सेकंड ये बोल रहा है, थर्ड ये बोल रहा है, फोर्थ ये बोल रहा है, एंड thus we come to a full flow chart in our head, a map in our head. If there are questions that are inferential, tone based, theme based, critical reasoning based, all of them can be answered without referring to the passage again. If there are factual questions, कभी कभी वापस जाने की जरूरत पड़ सकती है, बट थ्रू अ माइंड मैप आपको पता होगा एग्जैक्टली कहां वो आंसर लोकेटेड है. सो आपको अगेन पूरा पैसेज स्किम नहीं करना पड़ेगा वो आंसर ढूंढने के लिए. माइंड मैपिंग अगेन इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव टेक्निक जो रिटेंशन में हेल्प करती है, पैसेज अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है, उसके एनालिसिस में हेल्प करती है. सो वी डू माइंड मैपिंग विद एवरी आर्टिकल दैट वी रीड.
ओके इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी वोकैबुलरी आएगी और क्योंकि हम अलग अलग जॉनरे से करते हैं तो अलग अलग जॉनरे की अलग अलग वोकैबुलरी होती है। जब आप मेरे प्लस बैचेस में आएंगे, FYI मेरा पहला जो प्लस बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 7th of July को। कल इसकी एक फ्री स्पेशल क्लास है वेयर आई विल बी टेलिंग यू अबाउट ये मेरी क्या टीचिंग टेक्निक होगी और मैं आपको एक प्रीव्यू क्लास दूंगी कल ऑन आवर ऐप। तो दैट्स अ फ्री क्लास इफ यू स्टिल नॉट एनरोल योरसेल्फ फॉर दैट फॉर फ्री, ध्यान से कल आ जाना लाइव। ओके तो जब आप मेरे बैचेस में आओगे हम बहुत रेपिटेटिवली माइंड मैपिंग प्रैक्टिस करेंगे, प्लस ये जो वोकैबुलरी है जो एक स्पेसिफिक जॉनरे को बिलोंग करती है, जैसे अगर आप आर्ट बेस्ड पैसेजेस की बात करते हो तो उनमें ना कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जो शायद एक कॉमन मैन को ना पता हो बट आर्ट में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। सिमिलरली इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं लेकिन एक नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है उसके लिए वो वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो जब हम बैचेस में ये डिस्कस करेंगे हम बहुत सारी ऐसी वोकैबुलरी भी डिस्कस करेंगे जो इन स्पेसिफिक जॉनर्स को बिलोंग करती है। साइकोलॉजी के बहुत सारी जार्गन्स हम डिस्कस करेंगे, कॉमन टर्म्स जो यूज होते हैं सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन क्लासेस में भी और इनकी लिस्ट हम क्लासेस में भी देखेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ द पैसेज मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो हर क्लास में लेके आती हूँ। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, आप वो क्वेश्चंस आंसर करेंगे विदाउट रेफरिंग टू द पैसेज, क्योंकि हमने माइंड मैप किया है और मैंने एक भी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं डाला क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस तो सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं, सीटर क्वेश्चंस होते हैं, ये तो कोई भी आंसर कर सकता है, स्कूल का बच्चा भी आंसर कर सकता है ना। तो फैक्चुअल के लिए हमको रेफर बैक करने की जरूरत पड़ सकती है बट मेन थीम के लिए रेफर करना, टोन के लिए रेफर करना, अगर आपने मेरे साथ एनालिसिस करी है पूरे आर्टिकल की आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है। सम पीपल टेल मी कि मैम पैराग्राफ के साथ क्वेश्चंस लाया करो, डज नॉट मेक सेंस क्योंकि उसके लिए आपको बार बार रेफर करने की आदत हो जाएगी और वो हम नहीं करना चाहते क्योंकि कैट इज अ टेस्ट ऑफ योर स्पीड एज आई सेड दैट अर्लियर। तो मैं पैराग्राफ के साथ क्वेश्चंस नहीं लेके आऊंगी, वो मैं पैसेज के एंड में लेके आऊंगी और आप बिना देखे आंसर करेंगे पैसेज को। Okay, so that's the agenda for us. That's what we're going to be doing in the sessions that we have on editorial drill and yet again today as well. A quick reminder, I with Ravi sir and Lokesh sir, we are coming with our batch on the 7th from the 7th of July. So if you've not subscribed for it yet, you can download our app visit karke you can take the subscription. That, my students, is the link, that's the QR code फॉर माई टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप में मैं आज क्लास के बाद आपको वो सारी वोकैबुलरी शेयर करूंगी जो आज हम क्लास में करेंगे, मैं वो आर्टिकल शेयर करूंगी जो आज हम इस एडिटोरियल ड्रिल में करने वाले हैं, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और एक होमवर्क का जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी मैं इस टेलीग्राम ग्रुप में ही बताऊंगी। सो जो मैं क्वेश्चंस लाई हूं उसमें से क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन है जो कि एक होमवर्क है आपके लिए। अगर आप इस टेलीग्राम ग्रुप में, मैं यहां आपको आंसर बता दूंगी उसका क्या है। ऑल्टरनेटिवली आप कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो के नीचे आफ्टर द क्लास एंड्स कि उस होमवर्क का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसको स्कैन कर लो, दिस विल डायरेक्टली लीड यू टू माय टेलीग्राम पेज जिसका टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है अल्पा शर्मा VARC मेंटोर। प्लस वी हैव न्यू बैच फॉर CAT 2026 aspirants. It's an early starter batch. Enroll yourself now if you want to start ahead of others. This batch will be full of lots of classes, mocks, sectional tests, analysis. It will prepare you for CAT as well as other management entrance exams. Rush up, do that right now. And we have our diagnostic test happening tomorrow. अगर आप चाहते हैं कि आप compete करें thousands of students के साथ, register yourself right away through our app. दो slots में होगा 12:30 and 5 PM. Take the test and see where do you stand amongst thousands of students. आते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल का देखो हेडलाइन क्या है, The Mind Body Revolution, how the division between mental and physical illness fails us all. The division fails us. Division between mental and physical illness, that fails us. तो करेंगे क्या, पॉज लो, पूरा पैराग्राफ पढ़ो, पूरा पैसेज, ये दो पैराग्राफ जो है ये पढ़ो, एनालाइज करो, इस पैराग्राफ के बाद पॉज करो, फिर इस पैराग्राफ के बाद पॉज करो, सोचो ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है, फिर सोचो ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है, मैप क्रिएट करो अपने हेड में। When you reach here after the pause, send me done in the chat box, then we'll analyze these two paragraphs. Good luck.
पढ़ लिया पेज everyone? Okay. Some years ago, Camilla suffered such persistent pain at the site of an old injury that doctors thought she would need major surgery. अब old injury थी, but it reoccurred. The injury did not reoccur, the pain reoccurred. And it was so intense that the doctors thought एक replacement surgery करनी पड़ेगी. It's a major surgery, okay? To delay this for a few months, they injected the foot with steroids so that we could probably, find some more time to get the surgery done. So steroids क्या करता है? It subsides the pain for some time. Steroids wear off. And when you stop taking steroids, the pain reoccurs. But nearly a decade later, that is nearly 10 years later, the pain was reduced. Now, steroid is not a medicine to cure that injury or the pain. It is only a painkiller. Okay, so here steroids were given to subside the pain for some time so that she could delay the surgery by 10 years. But when the steroids stopped, the pain was reduced. Reduce hona nahi chahiye because steroid is not a cure for the pain here. But how did the pain reduce? That's a big question. To Nod, whose day job is running the mental health neurosciences lab at University of Cambridge, this was fascinating. Now, this is a very important discovery that she did here. Why was it important? Because steroid should not have reduced her pain, even after steroids stopped. So, what reduced the pain? What happened here? And the conclusion was not all of her pain, it seemed, came from her foot. It seemed not everything, that kind of pain, came from her foot. Then, where did it come from? ये answer करो question मेरा. Where did it come from? If that pain did not come from the foot, where did it come from? Answer करो. If the pain did not come from her foot, where did it come from? It came from her mind. As Nod knew, chronic pain can cause physiological changes in her brain, a process that is now measurable in the lab. It seemed to her that her brain, as she puts it in her recent book, the balanced brain, the balanced brain had become used to pain, monitoring pain, and had begun to enhance the sensation of pain in my body. What does this line mean? जब बार बार पेन आता रहता है ना, तो माइंड उसकी आदत डाल लेता है. It gets used to that pain. Okay, 1 second, guys. It gets used to the pain. It gets used to monitoring the pain and that kind of sensation in the body. But for some time, when the pain stops, the mind gets used to the stopped pain. कि पेन नहीं है, पेन नहीं है, पेन नहीं है, ये फीड होता है माइंड में. That leads to much reduced pain when the steroids are stopped. Can I infer here mind is playing a role in the perception of pain, even if pain is there or not? The mind plays a role in it, in the perception of it. Can I infer it? कर सकते हैं, right? We can certainly infer that. The mind plays a role. Correct. Let's go to the next paragraph. Okay, this is a continuation of the previous paragraph. Read this, pause. Read this, pause. Send me a done when you're done.
Send me done when you're done analyzing both the paragraphs. Okay, let's get it. Removing the original source of the pain for a few months had altered this process of neuroplasticity enough to make a lasting difference to the amount of pain she experienced. ब्रेन को बार बार लगेगा पेन है पेन है पेन है, तो वो पेन ही प्रिज्यूम करेगा. पेन नहीं है नहीं है नहीं है, तो पेन आने के बाद भी उसको वो पेन कम फील होगा. Okay, there was alteration in the mind. Even after the trigger in her foot returned, she felt lesser pain. So we pause here. The conclusion is that the mind plays a role in your perception to pain. A conceptual division between mind and body has underpinned Western culture and medicine for centuries. That people divide pain or behavior of mind separately and body separately. What my body goes through is different and what my mind goes through is different. Illnesses are physical or mental. दो कैटेगराइजेशन कर दी, या तो आप मेंटली बीमार हैं या आप फिजिकली बीमार हैं. But now when this but is given, remember all your attention should be here. But is a contradictory conjunction that should grab your attention, because now the author is contradicting whatever is written before it. Till this time, it is said that people used to differentiate between physical and mental pain, physical and mental illness. But Nord writes, there is no separate category of illness. ये एक ही है, illness, and they are combined, mental and physical. They go hand in hand. One that is confined to the mind and does not involve biological changes. This category does not exist. सिर्फ माइंड है और उसमें आपको फिजिकल पेन फील नहीं हो रहा, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं. अगर आप मेंटली सिक हैं, आप फिजिकली भी पेन फील करेंगे, एंड वाइस वर्सा. एक एग्जांपल देती हूँ आपको, देखो ये समझाने के लिए. If a person struggles with a disease for a long period of time, do you think he can be mentally impacted with it? If yes, then this is an example of how mental and physical illness are actually one category. You're ill, and both the things go hand in hand. आपको प्लेसिबो इफेक्ट पता है क्या होता है? प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? अच्छा, आपने आपके घर में ऐसा कोई है या आपके कोई रिलेटिव्स में, कोई फैमिली में, डू यू नो ऑफ समबडी? माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू बी वन ऑफ सच पीपल. आपको भी पता लगेगा, जिनको लगता था बस मैं बीमार हो गया, मुझे डॉक्टर के ले जाओ, मैं बीमार हो गया, मुझे डॉक्टर के ले जाओ. डॉक्टर उनको दवाई देता और दवाई खाते हुए ठीक हो जाते थे. अब ये प्लेसिबो है. प्लेसिबो क्या होता है ना, चाहे उस दवाई में कुछ स्पेशल ना हो, बट जस्ट द आइडिया ऑफ टेकिंग अ मेडिसिन क्योर्स यू. This whole experiment was conducted with giving those tablets made of salt and no medicine. But even after taking those salt pills, people would feel, हाँ मैं तो ठीक हो गया, मैं बीमार नहीं हूँ अब. This is placebo. Mentally you feel, हाँ you're fine. You see, there is no separate entity of a physical and mental illness. They go hand in hand. Placebo is a typical example to explain that. Okay, let's continue. The separate categories, they do not exist. Not only that, she says, but the reverse also applies. There is no purely physical ailment. There is no purely mental and no purely physical ailment, in which ailment is बीमारी या आपका कोई चीज में suffering है आपकी, in which your brain does not play a role. If you are physically ill, your brain will also play a role. If you have physical pain, your brain is also involved in it. Recent research makes it increasingly possible to demonstrate this.
it also has profound implications on the way an illness should be approached. So we now have proof to say that physical and mental illness go hand in hand, and how a doctor or a person should see an illness now should be dependent upon the singularity of both physical and mental illness, that they are one. And a person who is suffering from the pain and a person who's treating it should look at it that way. So your treatment will alter drastically. Next paragraph. Read this and send me done. This revolution, what revolution? That mental and physical illness is in unison. They go together. This revolution could be transformative for millions of people for whom, as layman puts it, misguided dualistic approaches are causing preventable and relievable harm. So, when people consider physical and mental illness in separation, a physical illness will be treated only with that approach, and a mental illness will be treated only with that approach, not in singularity. This may cause a lot of harm that could have been prevented. This may cause a lot of harm that you could have been relieved of. आप बच सकते थे इस हार्म से अगर हमने मेंटल और फिजिकल इलनेस को एक देखा होता। आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, जो प्रोलॉन्ग्ड आप सफरिंग फील कर रहे हैं, वो रोकी जा सकती है अगर हम मेंटल एंड फिजिकल इलनेस को यूनिशन में देखेंगे तो। Currently, physical and mental medical services have different budgets, different buildings, सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मेंटल है तो आप अलग डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स अलग अलग होंगे, बट वो साथ में काम नहीं करेंगे, ठीक है? So there is a lot of difference. They work differently. The medical system often consists of discrete transactions, short visits to GP, specialists, and subspecialists, and the division of illness into specific containable issues, resulting in a pill, an operation, or a course of treatment. So,
Whatever illness you have, first you will go to a general physician, then a specialist, then a subspecialist, and then you will get medicine or an operation or whatever course of treatment that is prescribed. It's a top down arrangement. Top down arrangement क्या है? ऊपर से नीचे move कर रहा है. Okay? Top down arrangement, something like this in a hierarchy. Top to down movement like this, that tends to treat a passive patient as a set of individual parts that require attention. पेशेंट एक है, ठीक है, तो मैं यहां ड्रॉ करके दिखाती हूँ पेशेंट आपको. ये है मेरा पेशेंट, ये उसके हैंड्स है, ये उसके लेग है, ये उसका माइंड है. पेन हाथ में है, तो फिर आप सबसे पहले जनरल फिजिशियन के पास जाओगे, वो आपको भेज देगा एक ऑर्थो के पास में, ऑर्थो आपको भेजेगा एक सब स्पेशलिस्ट के पास में, वो सब स्पेशलिस्ट आपको पिल्स देगा प्लस बोलेगा नहीं ठीक हुआ तो मैं रिप्लेसमेंट सर्जरी कर दूंगा. वो क्या देख रहे हैं? इस फुल पेशेंट को ओनली एज ऑर्गन्स, एज पार्ट्स, इंडिविजुअल पार्ट्स. अटेंशन अभी सिर्फ इस हैंड को चाहिए, लेकिन वो ये भूल रहे कि ये माइंड इंक्लूडेड है इसमें, ये पूरा बॉडी एक साथ वर्क कर रहा है. डॉक्टर्स टेंड टू फॉरगेट इट. नेक्स्ट पैराग्राफ. What do you think? Is this line actually a taunt here? Let's break the paragraph and see. The physical is frequently prioritized over mental. देखो mental तो अभी आया है. आज से अगर आप 20 years पहले किसी को पूछते तो mental disease की कोई बात ही नहीं करता था, है ना? But now people have started talking. Yet physical illness is always prioritized over mental. It can be more difficult to access funds for someone with severe dementia whose body is still healthy. He is suffering mentally. ठीक है, this is an old age problem, dementia, forgetfulness हो जाती है, but severe dementia है, उसको funds नहीं मिलेगा easily क्योंकि उसकी body अभी भी healthy है. अगर opposite होता, body suffer करती तो शायद funds उसको जल्दी से मिल जाते. People with major mental health disorders like schizophrenia, bipolar disorder, major depression often die years earlier.
आयरनी देखो ये बात क्या है, ये पूरा आयरॉनिकल स्टेटमेंट है यहाँ। आयरनी इज जो लोग एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर से सफर करते हैं ना, वो फिजिकल डिसऑर्डर वाले लोगों से बहुत ज्यादा जल्दी दे जाए, ऑलमोस्ट अ डेकेड और मोर अर्लियर। तो फंड तो उनको मिलना चाहिए, बट लोग क्या कहते हैं, ओ दे कमिटेड सुसाइड, वो तो इसलिए मरे, दे डाइड बिकॉज दे हैड इलनेस, mental, but people don't acknowledge that. So they look at it separately and they look at it narrow mindedly. They prioritize physical illness over something else. So if a person died because of cancer and a person died because of suicide because of a mental illness, schizophrenia, bipolar disorder, you see how stark the difference is. That's the irony of the society the author is trying to bring out here. I love this paragraph. Next page. Good morning, ma'am. I'm new to it. What are we doing, ma'am? I'm targeting CAT 2026. Okay, Arjun. What are we doing? Let me tell you. We meet every alternate day on this channel, and I bring one article from nautil.us, aeon.co, The Guardian, The New York Times, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट से, जर्नल से मैं आर्टिकल्स लेके आती हूँ। आर्टिकल हम पढ़ने की कोशिश करते हैं. We try to understand the article. We try to learn the vocabulary through the article. We try to learn different reading techniques that you can use to solve a passage better. Then we do question answer on the article that I've bought. So various things we do through the article that we are doing today. Okay, you're right in the middle of the article, but it's okay. You can continue watching it. Hi, Sarthak. Okay. देखो मैंने आपको प्लेसिबो बताया था ना इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन. देयर इज नोसिबो एज वेल. प्लेसिबो का इविल ट्विन. प्लेसिबो क्या करता है, हाँ मैं ठीक हो गया दवाई खा के. नोसिबो बट मेंटली आपको वो ठीक कर देता है ना. दवाई कुछ चाहे ना करे, चाहे सॉल्ट पिल है, बट इट विल मेक यू फील फाइन. नोसिबो इज द इविल ट्विन. इफ वंस यू टॉपल्ड इन अ पब्लिक स्पेस और आपको चोट लग गई, आप गिर गए, आपको चोट लगी पब्लिक स्पेस में, नेक्स्ट टाइम आप उसी पब्लिक स्पेस में जाओगे, आपके मन में वापस वो डर आ जाएगा कि मैं पब्लिक स्पेस में जाऊंगा और मुझे चोट लगेगी. तो जैसे प्लेसिबो आपको काम करता है, नोसिबो आपको और एग्रीवेट करता है.
मेंटली तो है। आप फिजिकल पेन फील कर रहे होंगे। जो लोग फोबियाज फील करते हैं, दे स्टार्ट ट्रेम्बलिंग, घबराने लग जाते हैं, पैल्पिटेशंस होने लग जाती है उनको, दे स्टार्ट फीलिंग सम पेन इन देयर हार्ट। फिजिकल है बट है तो वो मेंटल ही। जैसे यहां अगोराफोबिया लिखा हुआ है, ओके। व्हाट इज अगोराफोबिया? फियर ऑफ ओपन पब्लिक स्पेसेस। तो अगर आपको पब्लिक स्पेस में कभी कुछ ऐसा हुआ था जिससे आप डर गए, you'll see that again happening to you multiple times. That's your brain telling you. Or these special phobias of spiders and dogs. If once a dog ran behind you and you were really scared, you would not want to go close to dogs again, ever again. ठीक है? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपरसेंसिटिविटी, ये सब एग्जांपल्स है हाउ physical pain you feel is actually generated through your mind. So your mental and physical illness, they go together. They are not two separate entities. Mental है तो physical है तो mental है. Okay, the same thing happens every time they go back to the supermarket. You develop symptoms, real symptoms, physical symptoms, but that's because of the mind playing with you. Got the paragraph, everyone? Okay, chaliye. Next paragraph. सार्थक, जॉब एक्स, कैटेगरी, ये सब भी चीज प्रोफाइल में बहुत कुछ काउंट होती है ना बच्चे। अदरवाइज 91, 89, 8 इज अ वेरी गुड प्रोफाइल, बट कैटेगरी क्या है, जनरल मेल, जॉब एक्स क्या है, ये सब भी चीज ऐड होती हैं। ठीक है, ऑल्सो प्रोफाइल बिल्डिंग और कैसे करनी है एक सेशन में लूंगी नेक्स्ट वीक ऐप पे। ठीक है, वहां अटेंड कर लेना। Okay, now this paragraph talks about inflammation. Again, your immunity does not differentiate between mental and physical disorder. It goes hand in hand. It can be because of an emotional distress, आपकी immunity low हो सकती है, environmental changes की वजह से हो सकती है, childhood trauma की वजह से हो सकती है, just being sedentary, sedentary is बैठे रहना, move नहीं करना, उस वजह से भी आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। तो आपकी इम्यूनिटी नहीं डिफरेंशिएट करती व्हाट इज द रीजन ऑफ योर इम्यूनिटी बीइंग लो और हाई। Similarly, inflammation also does not differentiate. Inflammation is any kind of literally burning, okay? But when I say physical inflammation, it could be something that's visible outside. कुछ यहाँ wound जैसा हो गया आपके, it can be inside your stomach, some inflammation that's causing stomach burning sensation. It can be inside your ear, it can be at any place. So inflammation also does not, it can be inside your mind as well. Inflammation does not differentiate. What is the reason for inflammation? It could be mental, it could be physical. Neither does immunity.
What does this paragraph talk of? Like inflammation does not differentiate between mind and brain, immunity also does not. And inflammation, because of the high inflammation, the brain, even if inflammation has subsided, the brain may actually still keep fighting an infection, that inflammation, which is not there. Okay, so because this brain and the physical form goes hand in hand, because the brain is fooled into believing the inflammation is still there, the infection is still there, despite it being caused, it may still keep fighting, and you may still feel real symptoms of the infection being there, despite it being subsided. ठीक है? I think this is our second last paragraph. Second last है शायद. Yeah. ओके, तो अब अगर इसको डील करना, अब सजेशन स्टार्ट हो गए हैं. ठीक है, suggestions क्या है? If you have to deal with such a scenario where you're differentiating between mind and body, what should you do? Let's learn to look at it in one go. So दो fallacies हैं. First, mind over matter. Fallacy क्या होता है? Something that's wrong. First, mind over matter. अगर आप सोचोगे आप ठीक हो तो आप ठीक हो जाओगे, ये पहली fallacy है. और दूसरा, matter over mind. All feelings and symptoms must be accurate reflection of what is going on in the body. ऐसा जरूरी नहीं है. Neither is it compulsory that if you think you're fine, you will be fine. Neither is it true that your brain and your body is feeling exactly what your body is going through. There may be a difference. We saw it through the example of inflammation and immunity. Inflammation ठीक हो गया था तो भी mind उसको constantly ठीक करने की कोशिश कर रहा था, है ना? So it's not always, it is another fallacy, a false belief that all feelings and symptoms are accurate reflection of what is going on in the body. The belief that physical symptoms come only from the body becomes a barrier for you to be treated effectively. Physical symptoms sirf body se aayenge, wrong. You cannot be treated with that methodology. It can be mental also. Maybe just thinking I am in pain. Maybe you aren't in so much pain. So you have to look at it in unison, how your mind perceives things and how your body behaves in unison to it.
होलिस्टिक ट्रीटमेंट क्या होता है? होलिस्टिक इज ओवरऑल. सो ये मेरा पेशेंट था, वापस बना देते हैं पेशेंट. होलिस्टिक ट्रीटमेंट ओवरऑल, माइंड बॉडी coming together. That's your holistic treatment. It's not easy to find. The first time ever they had witnessed FND symposium जहां ये सारे स्पेशलिस्ट गैदर हुए थे, फिजिकल एंड मेंटल and physical again. That has never happened before. It was very surprising. All argue that there is an urgent need to break down centuries worth of institutional cultural barriers and use all available methods. यार ये barriers break करो कि mind अलग है, body अलग है. जितने methods available है, use all of them. Cognitive, that is mental, emotional, social, and physical. What is in me, what is out me, that also. In me can be physical and mental both. Use all of it. Somehow in the biomedical evolution, which has been fantastically effective and beneficial in so many ways, this bit has got lost, that we need to treat somebody holistically, okay, and sidelined into something which feels real, unimportant, and fundamentally stigmatized as a person's fault and sole responsibility. So if you're mentally suffering and you are aligning them, it's your fault. It's your responsibility to deal with it. आप दोनों को यूनिशन में नहीं देख रहे हो. That's the problem, how people look at mental and physical illness separately. This is what people need to know. There is such a massive prize here. If only we can have an honest adult conversation about the full range of things that drive illness, that can be cognitive, social, mental, physical, and then take appropriate action, we can make it better. This paragraph is a suggestion by the author. All right. So since a lot of people aren't interacting today, I think it's the wrong timing for the class. I'll share the remaining structure, the questions, and the vocabulary in my Telegram group. You can quickly take a screenshot. I'll turn my camera off just a second. Okay, take a screenshot of the vocabulary here. और next page में भी मैं दिखा देती हूँ आपको. This is what we have discussed in the passage today. I'll be sharing all of it and the question answer in the Telegram group in the form of a PDF. Okay. Second page. And before I proceed, if you haven't joined my Telegram group, click on this link. Scan this link, scan this QR code. It will lead you to my Telegram group. I'll be sharing all the details there. These are our results. And that brings us towards the end of the class. Have a very, very good day, everyone. Work really hard, solve many, many questions. God bless you.